Hey guys, good morning, good afternoon, whenever you are watching my video. Today we will learn about how can we express the rainy weather at different situation. It can be a rainy weather, it can be like at normal situation or average, or it can be at very extreme level situation. So how can we express the rainy weather at different situation? We will learn over here. So thank you for watching my video. Let's begin. ना द फर्स्ट वर्ड विच यू कैन सी, जब रेन बहुत ही धीरे धीरे हो रही हो, पता भी ना चले, तो वर्ड विच काइंड ऑफ वर्ड वी कैन यूज ओवर हियर? इट्स स्पिटिंग. व्हाट डू वी से इट? इट्स स्पिटिंग फॉर वेरी नॉर्मल मैनर. और जब थोड़े से थोड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं रेन हो, थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे, सो विच काइंड ऑफ वर्ड वी कैन यूज ओवर हियर? इट्स ड्रिजलिंग. इट्स ड्रिजलिंग. आप जानते हैं कि जब भी क्या कहते हैं रेन होने वाली होती है या तो क्या होता है, बादल घेर लेते हैं पूरे आसमान को, और बादल काले काले कलर के होते हैं. सो फॉर घेरने के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड ओवरकास्ट, एंड काली के लिए डार्क ओवरहेड. एंड द नेक्स्ट वर्ड विच वी कैन यूज ओवर हियर फॉर एक्सट्रीम लेवल, लाइक जब रेन बहुत तेज हो रही है, तो विच काइंड ऑफ वर्ड विच वी कैन यूज ओवर हियर? इट्स चेकिंग इट डाउन. इट्स चेकिंग इट डाउन. So thank you for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.